Namaskara friends. Bombay government, its illegal actions, its possible design to collect 40% commission from reckless issue of tenders has just been quashed by Election Commission of India an hour ago. Congress party had complained to CEO of Karnataka, pointing out that just in the run-up to the elections, tenders were released or issued hurriedly by the Bombay government. Just as the code of conduct came into place, if you picked up every newspaper for a month earlier or days earlier, you will find that there were tons and tons of tenders being issued without a appropriate certification of their estimates by the departmental authorities, B, without assessment of even the need for work, and C, without there being even a demand for the work. So these are three important parameters. A, there has to be a demand for execution of a particular work. B, an assessment has to be made about the cost of the work and the time of execution. And in most departments, there is a departmental appraisal committee which decides how much should be the cost of work. I can't say that this mic will now cost 50 lakh rupees. There is a departmental appraisal committee which will say approximate cost of this particular product would be this much. Bombay government, in its quest to collect as much money as possible, with corruption at its nozzle, with 40% commission being the sole aim, with a desire to brazenly loot the exchequer of Karnataka being the sole aim, recklessly issued contracts. I will like to just read for you the list of the contracts that we had submitted. The CEO of Karnataka took no action, so I went to Election Commission of India, and this is what we pointed out. Some of the details of the tenders and bids are as under. Shirdi Ghat 1976 crore, Oblapur Somakanna Mata 1682 crore, Andhra Pradesh Karnataka border Raichur works 1633 crore, Hassan 4 lines 1318 crore, various bypasses 1167 crore, Belgavi Humgun 1044 crores, and so on and so forth. I want to read the whole list to you, and since I'm sending the document. The total came to about 16,516 crores. So once again repeat that. 16,516 crore. I'm sending you this document, my friend. It will be with you. Mr. Ravi will send you just now. So finally, Election Commission of India has today issued an order an hour ago, wherein they have said three things. A, that Election Commission of India have issued the direct order to Government of Karnataka, A, not to process any tenders after the Model Code of Conduct coming into force. 2, keep the tenders on hold till the completion of elections. And 3, all departments have been directed to not call for any tender, not process or finalize any tender already called, and not to give work orders. Mr. Bombay, you should resign now. You have been indicted. You stand exposed.
by none less than the Election Commission of India. The Election Commission of India had to say three things against you, Mr. Bommai, and against your 40% commission government. And I repeat, everybody has been issued instruction not to process any tender after model code of conduct coming into force. B, to keep all tenders on hold till the completion of elections. And 3, not call for any tender, not process any tender, not finalize any tender already called, and not to give work orders. So these 4 things. If you remember, we held a press conference, Dharamaiya ji, myself, D.K. Shivkumar ji, one morning very early at their residence of Mr. D.K. Shivkumar. And we had said the same things, we had raised the same demand, we had warned officers. I again reiterate, all officers and all politicians, including ministers, who have processed the tenders, hurriedly issued the tenders, without proper estimates, without proper appraisal, without arriving at the cost of tenders, without looking at the need of the work, they will all be now prosecuted. The government will change, we will now conduct a full-scale inquiry. Whichever officer is found responsible for issuing all these tenders which are now stayed, he or she will be prosecuted for the major punishment under the conduct of service rules. All politicians who hurriedly signed this, they will have to face criminal prosecution for these misdeeds and acts. So this is a huge blow to Mr. Bommai and to his 40% commission corrupt government. That's one thing. There is a small but important thing. Since nobody nowadays is attending public meetings of BJP leaders, chairs are mostly empty, 3/4 for Mr. J.P. Nadda, he stopped coming only now. Mr. Amit Shah, again all chairs are empty. Prime Minister Modi's paid crowd has stopped coming, and Chief Minister finds no people in his public meeting. So they had now resorted to, either through ED income tax or otherwise, that I don't know, only those people can tell. But they have now started resorting to taking film stars. And I have always said, film stars, actresses, okay, we respect artists, it is their wish. But politics and governance are serious business. As you remember, politics is not a 3-hour entertainment film or a 10-minute film song where you go, you relax, you buy a ticket, you entertain yourself, you go home. Politics deals with, governance deals with, administration deals with lives of over 6.5 crore Kannadigas, our brothers and sisters. But BJP had made a mockery of this also, by saying now, instead of Mr. Modi or Amit Shah or Chief Minister Bommai or their other leaders being the star campaigners, actresses are now star campaigners of BJP. And they were using, if I may say, extremely obnoxious tactics. The film stars they were making as their star campaigners, if you go around even in Bangalore, on the police post also they have put their pictures. So on one side they are campaigning for BJP, on the other side all government buildings have pictures of those film stars. So we told, we are not scared, you can bring the entire Hollywood and Bollywood and Tollywood and all other industry, because people of Kannada want a better life. Song and dance are good in movies. We all go. I also love movies. We all love our film stars. But politics is not film. Politics is not entertainment. Politics is delivery and governance. So
We had told that we have no problem in any artist. I reiterate, joining the BJP, being their star campaigner, no issue. But then they can't, their faces can't be put on government buildings and government advertisements. For this would be conflict of interest. And this is that representation that we had filed under my name to the Election Commission of India. And they have also directed, this is for Mr. Kicha Sudeep, I am told, the film actor. So Election Commission has directed removal of all material related to him. This is the order I am sending you. From all kind of government building, police post, advertisements, everything else. So this is in direct conflict of interest. You will find a third part of the order. They have decided all three parts of my representation together. The CEO Karnataka was refusing to approve our advertorial films. They have also now directed that all of them should be clear. So this is a day when the 40% commission Sarkara and its tenders, mafia of over 16,000 crore, everything has been stayed. So it's a huge blow and indictment of none less than Chief Minister Bommai and the corrupt practices perpetuated by him. Mr. Bommai, if you have little shame left, if you have even a drop of shame left equivalent to a drop of water, you should today resign. You have no rights to be acting Chief Minister of the state. We are sending you all these papers, you can have a look. Any questions you are welcome to ask. आदरणीय साथी, I'll be brief. आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी की बोम्मई सरकार ने 40% कमीशन सरकार ने चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट से ठीक पहले, लगभग पिछले उससे पहले 30 से 45 दिन में हजारों करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। ना ये देखा गया कि किसी काम की जरूरत है या नहीं, ना ये देखा गया कि किसी अमुक काम की कीमत क्या होनी चाहिए, ना ये देखा गया कि डिपार्टमेंटल अप्रेजल कमेटी जो कॉस्ट निर्धारित करती है उससे इसकी कॉस्ट निर्धारित हुई या नहीं। हजारों करोड़ केवल 40% कमीशन लेने के लिए उनके टेंडर जारी कर दिए गए। हमने बाकायदा सीईओ कर्नाटका को लिख कर दिया और 16,000 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उनकी डिटेल्स जारी की। चुनाव आयोग ने आज एक अभी आदेश जारी किया। सीईओ कर्नाटका ने कोई कार्रवाई नहीं की थी तो हम चुनाव आयोग में गए तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सबने हमारी बात सुनी और उन्होंने 4 बातें कह दी। पहला, उन्होंने कहा कि सारे जो टेंडर हैं चुनाव पूरा होने तक उन्हें होल्ड पर रखा जाएगा। सब डिपार्टमेंट्स को यह भी डायरेक्शन दी कि कोई नया टेंडर नहीं बुलाया जाएगा। यह भी कहा कि जो टेंडर बुलाए गए हैं उन्हें ना प्रोसेस किया जाएगा ना फाइनलाइज किया जाएगा और कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। तो ये सीधे सीधे बोम्मई सरकार की 40% कमीशन को लूटने की जो प्लान थी और डॉक्टर नासिर हुसैन खुद गए थे उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर, ये उन्हें वो एक्सपोज हो गए। बोम्मई साहब, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चुल्लू भर पानी जो है वो आपको ले लेना चाहिए अपनी अंजलि में और आज ही आपको एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहने का अख्तियार नहीं बचा। आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यपाल अब कर्नाटक की सरकार चलाएं 10 मई तक, 13 मई के बाद तो लोग कांग्रेस को दे देने वाले हैं। और इसी प्रकार से, क्योंकि बोम्मई साहब को, जेपी नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को कोई अब सुनने नहीं आता, तो अब बीजेपी को केवल एक्टर एक्ट्रेसेस का सहारा है। हम सब एक्टर एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं, सब फिल्म देखने जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, 3 घंटे की एंटरटेनमेंट है। पर राजनीति सॉन्ग और डांस नहीं है, 10 मिनट का गाना नहीं है, राजनीति 3 घंटे की फिल्म भी नहीं है।
राजनीति और सरकार और शासन, ये गंभीर विषय हैं और इन गंभीर विषयों से 6.5 करोड़ कर्नाटका के भाई बहनों की जिंदगी प्रभावित होती है। जैसे 40% कमीशन सरकार की लूट ने कर्नाटक को लूट लिया, तो इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर भी किया है कि इनके जो फिल्म स्टार एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और जिनके चेहरे इन्होंने पुलिस पोस्ट और पता नहीं कहां लगा रखे हैं। एक दिन मैं गुजर रहा था अभी रात को कांग्रेस ऑफिस से, तो मैंने ये रास्ते में खुद ही फोटो ली मेरे फोन से, 12 साढ़े 12 का समय, ठीक, सारी पुलिस पोस्ट के ऊपर उन्होंने अपने स्टार कैंपेनर्स की फोटो लगा रखी, तो ये हमने भेज दी। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हटा दी जाए, ये गलत कर रही है बीजेपी की सरकार। तो ये बहुत बड़ी उनकी इंडाइटमेंट है और अब बोम्मई जी को एक्टिंग चीफ मिनिस्टर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी जो लूट की प्लान थी उस सबको स्टे कर दिया गया है। मैं फिर दोहराता हूं, सिद्धारमैया जी ने, डीके शिव कुमार जी ने और मैंने पहले भी कहा था, उसके बावजूद ये टेंडर जारी हो गए। कर्नाटक सरकार के जिस अधिकारी ने ये टेंडर जारी किए हैं और जहां प्रॉपर अप्रेजल नहीं है, वहां हम उनको मेजर पनिशमेंट पर चार्जशीट जारी करने वाले हैं। और जिस पॉलिटिशियन ने, जिस मंत्री ने बगैर प्रॉपर अप्रेजल के टेंडर जारी किया है, उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। 16,500 करोड़ के शायद टेंडर स्टे हो गए हैं, तो 40% बनता है 6,600 करोड़। कांग्रेस ने आज कर्नाटक के लोगों का 6,600 करोड़ बचा दिया है और उसके सजग प्रहरी आप लोग भी हैं, इसलिए आपको भी शुभकामनाएं। एनी क्वेश्चन यू वेलकम टू आस्क। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की रैलियों में भीड़ अब आ ही रही है, लेकिन बीजेपी ने तो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री को रखा है, दर्जनों रैलियां होने वाली है। ये तो उनकी मर्जी है, मैं क्यों टिप्पणी करूं। हारी हुई भाजपा, आप देखिए प्रधानमंत्री जी को पहले बोलते थे 13 को आएंगे, 13 को नहीं है, फिर बोले 15 को आएंगे, 15 को नहीं है, फिर बोले 16 को आएंगे, फिर 16 को नहीं है, फिर बोले 18 को आएंगे, अब 18 को भी नहीं है, अब कह रहे हैं 21-22 के बाद आएंगे। कर्नाटक के लोग तो कभी भी किसी का अपमान करते ही नहीं। हम तो कर्नाटक के लोग तो स्वाभिमानी है, सबका आदर करेंगे, वो प्रधानमंत्री की इज्जत भी करेंगे। परंतु जो डबल द्रोहा हुआ है, डबल इंजन सरकार का जो डबल द्रोहा है, उन पर बैरंग स्टैंप लगाकर लौटा देंगे। सर, आप लोग इस बार मैजोरिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 150+ की बात कर रहे हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, इन लोगों की रैली का क्या शेड्यूल होगा, कितनी रैलियां होंगी? राहुल जी तो कल भी यहाँ रैली की उन्होंने कोलार में, आपने कवर भी किया। आज भी उन्होंने बीदर और दूसरी रैली की राजशेखर पाटिल जी के यहाँ उमनाबाद में, वो रैली भी की, मैं भी वहीं से आया हूँ। राहुल जी को अपना मकान की चाबी लेनी है 21-22 के करीब शायद, उसके बाद वो प्रियंका जी, खड़गे साहब सब यहीं रहेंगे। हमारे लीडर तो हर जगह से मांग आ रही है, हम उनका कार्यक्रम बना रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। These papers we are circulating to you.